So, hi everyone. I'm Ashok. In this video, we will going to solve single element in sorted array. So again, this is a question of binary search. First of all, how do we know that this problem involve binary search? So you can see here we have mentioned sorted array, and we have to find the single element in sorted array. Okay, so yeah. Let's see how we can solve this question. Before the binary search, what will be the brute force solution for this case? Okay, so it's easy. You can all guess it. We can solve it in a big O of n time. How? By using the linear search, definitely. So you can see the first example here: 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 8. Before that, what the question says, let's see that. You're given a sorted array consisting only one integer where every element appear exactly twice, except one element which appear exactly once. Okay. Return the single element that appear only once. Your solution should be big O of log n and big O of one space. Let's ignore that big O of O of space and big O of log n. First of all, let's see how we can solve this. Okay. So, like the first thing, we can solve it in a big O of n. How? We can do the simpler linear search, like iterate over this element. Let's iterate over from the second element, and we will see if this equal to the previous element. Then we will skip it. Again, this does not equal to the previous element. Sorry, this will not work. My bad, my bad. We can use the set here. Has set, like we have 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 8, 8. So like we will start with set. What has set do? Uh, Actually, had set does not had set automatically remove all of the duplicate elements. So in this case, we will start adding in the hash set linearly. We will add 1, it will be 1. Now we will add again we will see 1, so this contain 1. So yeah, we will skip it. We will add 2, and definitely there should be 2 here, which we will add. Again, this will automatically add 3. It will not show. So like here, we if we maintain any of the pointers that say like consecutively element added or not. If the elements are added consecutively, then we will return false key this element was the main cause. If we don't want that, we can use XOR. XOR also, what XOR do? Like XOR have one simple property. If we do 1 XOR 1, it will return 0. So in this case, if we XOR all of the elements, so each of element have their own pair. So at last we will left with only the single element. How so? See in this example, 1 XOR 1 will be 0, 0 XOR 2, XOR 3, XOR 3, XOR 4, XOR 4, XOR 8, XOR 8. So this will become 0, this will become 0, this will become 0, this will become 2, this will become 0. Ab 0 XOR 0 XOR 0 XOR 2 definitely will be 2. So we can get our final element, but in this case we have to solve it in big O of log n. So what will the approach here? So let's see. Again, let's see the example 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 8, 8. So इस केस में what we can see here कि अगर सारे एलिमेंट पेयर में रहते, सो लाइक हम यहाँ एंड पे आते, तो we will definitely get 0 1 odd index. Okay, if this was the pair, let's assume here we have 1 1
2 2 3 3 4 4 8। तो क्या होता है इस केस में? If we find the mid element here, 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 element, so definitely 0 plus 8 divided by 2 4 0 1 2 3 4। सो हम यहाँ पे ये देख सकते थे कि लाइक हम मिड पे हैं, मिड वैल्यू मेरा इस केस में 3 है। सो अब अपन क्या चेक कर सकते हैं कि लाइक ये मिड तो 4 से डिवाइड 2 से डिवाइड हो जा रहा है ना, इंडेक्स 4। सो इस केस में हम अपने आगे वाले से चेक करेंगे कि अगर ये डिवाइड हो गया तो इस केस में इसके आगे वाला अगर सेम एलिमेंट है तो डेफिनेटली वी आर गुड टू गो, एंड ये एरे इतना पार्ट सॉर्टेड है, हम आगे मूव करेंगे क्योंकि 8 मेरा इधर है। सो स्टार्ट इक्वल टू इफ मिड परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0 एंड विद दैट ARR ऑफ मिड इक्वल टू ARR ऑफ मिड प्लस 1। सो इस केस में हम क्या करेंगे अपन, वी विल मूव फॉरवर्ड। सो स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, केस 1 हमारा, ये केस 1 रहा, दिस इज आवर केस 1। व्हाट विल बी द केस 2? सो लेट्स से हम यहाँ से स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 पे मूव कर गए। ओके, सो हमारा स्टार्ट हो गया 5, एंड हो गया 8, 8 5 13, 13 डिवाइड बाय 2 6 इन दिस केस। So 6, what will be the sixth element? 0 1 2 3 4 5 6 4। अगेन हमें क्या मिला, मिड परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0। सो अगेन हम इसके आगे वाला चेक करेंगे एलिमेंट, सो डेफिनेटली ये सही एलिमेंट है। ओके, सो अगेन वी विल मूव एंड वी विल फाइंड। नाउ लेट्स सी वन कॉम्प्लेक्स थिंग, जस्ट रिमेंबर दिस केस 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7। अब इस केस में देखते क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 13 एलिमेंट्स हैं। सो 0 प्लस 2, यू कैन सी कि हमेशा एलिमेंट भी 13 होते हैं, मतलब ऑड ही रहेगा क्योंकि बाकी सब पेयर्स में ही है ना। सो 0 प्लस 12 इक्वल टू 6, 6 एलिमेंट पे क्या है, 0 1 2 3 4 5 6। So we got 4. We got 4 at 6 element. So again अब क्या हुआ यहाँ पे हम देखे ARR of mid, फर्स्ट ऑफ ऑल ये केस हमारा इस पे एग्जीक्यूट करते हैं 6 डिवाइड बाय 0। तो अपन क्या चेक करेंगे, ARR ऑफ मिड इक्वल टू ARR ऑफ मिड प्लस 1। सो ऐसा नहीं हुआ इस केस में, यू कैन सी हियर कि नहीं ये तो चीज फॉलो नहीं हो रहा, ये इसके इक्वल नहीं है। सो इट मीन्स हम इधर हमारा एरे सॉर्टेड है, हम इससे पहले ही हमें इस साइड में ही चेक करना है ना, क्योंकि हमारा ये केस यहाँ पर हो रहा है ARR ऑफ मिड इक्वल टू ARR ऑफ मिड माइनस 1। इक्वल तो है पर माइनस 1 के इक्वल है ना। सो हम इस केस में मिड को पीछे मूव कर जाएंगे, है ना। सो एंड विल बी मिड माइनस 1। So what will be the our end? So here we are at 6. Now what happened? End will be 5. So 5 plus 0 divided by 2 equal to 3. No, in this case it will be equal to 2. So what the element is at 2? 0 1 2. So we are at element 2 again. So यहाँ पे हमें एक और केस लिखना होगा। If mid percentile 2 equal 0 and ARR of mid equal to ARR of mid minus 1, so and equal to mid minus 1, case 2, we have two cases here. So let's see what will happen.
अब हम 2 इंडेक्स पे हैं, इंडेक्स नंबर 2 पे। सो अगेन यहाँ पे 2 इंडेक्स मिड डिवाइड परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0 हो रहा है। सो अगेन हम इसको चेक करेंगे। सो या इट सेटिस्फाइड इट। सो हम स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 पे मूव कर जाएंगे अगेन। सो आवर स्टार्ट विल बी 3, आवर एंड विल बी एट 5, 5 plus 3 divided by 2 equal to 8 divided by 4. So we'll reach at 3. So 3 अब क्या है? 5 divided by 4. What will be the value? 3. You can see, wait. 8 divided by 2 equal to 4. Element ARR of mid percentile 2 equal to 0 again. ये चीज होता है ना? सो अब इस केस में क्या हो रहा है कि हम 3 पे हैं। यू कैन सी हियर 3। अब 3 पे ना ही ये इसके इक्वल है, ना ही ये इसके इक्वल है। सो दिस विल बी आवर आंसर, रिटर्न इक्वल टू मिड। एंड वी कैन सी कि हम हर बार मेरा मिड परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0 ही हो गया। लेकिन इस केस में हमारा कभी मिड परसेंटाइल 2 इक्वल टू 1 क्यों नहीं हुआ? सो हम वैसे भी केस को देखते हैं ना। डेफिनेटली इट्स नॉट ऑलवेज कि मिड परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0 ही रहे। पता नहीं इस केस में हमें कैसे मिल गया। Let's see the another example that question gave us. पहले इसको मिटाते हैं। We have got our two cases. Yes. Wait, sorry. Yeah. So where we are at, we will see the example 2. Yeah. 3, 3, 7, 7, 10, 11, 11. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okay, we got it. 0 plus 6 divided by 2 equal to 3. So now our AR of mid equal to 3, which does not divide by 2. So let's see first what is 2. 0, 1, 2, 3. Okay, cool. We get 7. So अपन क्या करते थे चेक। पहले क्या होता था कि अगर हमारा 3 है, सो आप सॉरी, आई हैड गॉट सम इंटरप्शंस। लेट्स कंटिन्यू। तो हम कहाँ थे कि हमारा जब मिड इक्वल टू 3 हो गया, सो वी कैन सी हियर पहले हमारा केस क्या करता था। मिड इक्वल टू 0 पे हम मिड को मिड प्लस 1 से चेक करते थे, तब हम स्टार्ट को मिड प्लस 1 पे मूव करते थे। अब क्या हो रहा है कि हम देख सकते हैं इधर का ये एरर सही है, तो हम मिड माइनस 1 से कंपेयर कर रहे हैं। इफ एरर ऑफ मिड परसेंटाइल 2 इक्वल टू 1, then we will compare if error of mid equal to error of mid minus 1. So we will move start equal to mid plus 1. So इसका वाइस वर्सा होगा। लेट्स सी here ये कैसे होता है। यहाँ पे 4 हो गया हमारा इस केस में। सो दिस इज आवर केस नंबर 3 and 4. 4 plus 6 divided by 2 equal to 5. Again, we were 0, 1, 2, 3, 4, 5. We got at 11. Let's see at 11. 5, we got 11. So again, we will compare here mid equal to not to error of mid equal to error of mid minus 1 से हम compare करेंगे, नहीं सही है। So we will compare with error of mid plus 1 से, है ना। error of mid equal to error of mid प्लस 1। सो हम एंड को मूव कर जाएंगे, है ना। एंड इक्वल टू मिड माइनस 1। सो हम इस पे मूव कर गए। एंड इक्वल टू एंड मेरा था 6, 6 इक्वल टू 5 माइनस 1 4 आ गया। सो वी आर एट 4, आवर स्टार्ट एट 4, definitely it will be 4। and if we ran this case,
कि 4 रुपया में मिड इक्वल टू 0, तो इन दोनों केस में एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वी फाइनली रिटर्न द मिड वैल्यू. So this is how we can. Now let's code this question. Sorry, I was re-recording it. So let's first of all go through the brute force solutions that like we are doing a chop. So for this, let's define any value int answer equal to 0, and we will iterate over our array. For int I in nums, we will answer equal to answer XOR I, and we will return our answer. So let's run it. So you can see, let's try to submit it. Yeah, you can see as expected, it to beat only 25% of the solutions. So now let's do our binary search that we have done on the notebook. So what was the case if mid percentile 2 equal to 0, and like if error of equal to, sorry, what I was doing here, and error of mid equal to error of mid plus 1, then we will do start equal to mid plus 1. Otherwise, in the other case, if same value, control C, control V, if and ARR of mid equal to ARR of mid minus 1, then we will do and equal to mid minus 1. So if mid percentile 2 equal to 1, and error of it was error of mid equal to mid minus 1, mid equal to error of mid plus 1, then we will do and equal to mid minus 1. Otherwise, if mid percentile 2 equal to 1 and share of mid equal to error of mid minus 1, then we will do start equal to mid plus 1. So now let's write the code for it. Int start equal to 0, int and equal to, let's name it arr dot length minus 1, and in this if int while start less than equal to end, int mid equal to start plus end divided by 2. So now we will check here if ARR, first of all, if mid greater than 0 and ARR of mid equal to ARR of mid equal to ARR of mid minus 1. So here we will check if mid percentile 2 equal to 0. So what we will do, this is our this case here mid minus 1,
and mid percentile will end equal to mid minus 1. So we'll do end equal to mid minus 1, else what will be the value? Hmm, ARR equal to mid minus 1. Here we are doing mid minus 1. Here we are doing mid minus 1. So here start equal to mid plus 1. Start equal to mid plus 1. If else mid less than, sorry, it will be else if, not else if uh mid less than ARR dot length and AR of mid equal to AR of mid plus 1 if mid percentile 2 equal to if mid percentile 2 equal to 0, then what we will do? So mid percentile 2 equal to 0, mid plus start equal to mid plus 1. Start equal to mid plus 1, else end equal to mid minus 1, or if none of them met, return mid, return minus 1. Let's try to run it. I have tried something your way. It might be unknown. Okay. So let's fix the error. So I was wrong. Cause this loop execution is bit different. We should do on the basis of this value as we are changing in between those. So let's do that. If mid percentile 2 equal to 0, then if so here we will do else. In this case here if mid, let's do just maybe we'll get that out of bound, but let's ignore that. We're going to get mid greater than 0 and an error of multiple tools also mid minus 1, error of mid minus 1. So here we will do we have to end equal to mid minus 1, else if ARR mid less than ARR dot length and ARR of mid equal to ARR of mid plus 1, we will choose start equal to mid plus 1, else return mid. And in the if else case, let's copy this, Control C, and here also we'll do the same but in the opposite manner, like start equal to mid plus 1 and equal to mid minus 1, otherwise we will do the return. Let's try to run it. That's so strange. Output is 4, expected is, oh shit. Here we go, 0, 1, 2, 3, 4. Oh, our earlier solution was also correct. Sorry. I was just bit overthinking there. Yeah, fuck bro. That was my mistake. We had to return. Return ARR of mid.
Return mid minus one, return it. Yeah, I think it's not keep that error. Sorry, that time that was my mistake. The loop was correct. I was just bit overthinking. Okay, we'll get index out of bound length. I don't think we will now get it again. Oh, let's use this test case. Try to run it. Yeah. Yep. So here we go. I will provide you the gist. And yeah, sorry, I'm just a bit nervous because these are my early days videos. I don't know how to communicate